Renaturation. Renaturation is the process of formation of double-stranded DNA from the denatured single-stranded DNA by the formation of hydrogen bonds is called renaturation. It means to reform the double helix structure again after denaturation. यानी रीनेचुरेशन प्रोसेस जो है जब ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हाई टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर जो है वो अगेन लो कर दिया जाता है तो फिर यही सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीनेचर्ड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं दोबारा से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन. Following are the three steps involved in the renaturation. Number 1, non-specific contact formation. Number 2, nucleation, and number 3 is zipping. Look here. That is the denatured single-stranded DNA. After denaturation, the hydrogen bonds are broken down and the double helix are separated from each other to form single strands at high temperature. Now during the renaturation, when the solution is returned to lower temperature, complementary regions on separate strands form base. So this is called nucleation, and that is the area of nucleation where the complementary base regions again through hydrogen bonding, they meet again through the hydrogen bonding. This is called area of nucleation where the hydrogen bond formation take place to form the double helix again. After nucleation, zipping occurs rapidly. During the zipping, the duplex DNA reform its original structure again, that is the double stranded DNA. यानी जब डीनेचुरेशन हो जाता है और डीनेचुरेशन के रिज़ल्ट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो जाती है तो सिंगल स्ट्रैंड्स आ जाते हैं. अगर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर दोबारा से लो कर दिया जाए तो यही दो सेपरेट स्ट्रैंड जो है वो बेस बनाएंगे, यानी एडेनिन थायमिन के साथ और गवानीन साइटोसिन के साथ बेस पेयर्स बनाएंगे. इसको न्यूक्लिएशन कहते हैं और ये एरिया ऑफ न्यूक्लिएशन यहाँ पे शो हुआ है जिसमें दो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है उसके बेसिस आपस में मिल रहे हैं. जब न्यूक्लिएशन हो जाती है तो उसके फ़ौरन बाद रैपिडली जिपिंग स्टार्ट हो जाती हैं और जिपिंग में यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी फॉर्मेशन तेज़ हो जाती है और डबल स्ट्रैंड जो है वो हमारे पास डीएनए के आ जाते हैं, यानी बिल्कुल उसी तरह ओरिजिनल डुप्लेक्स डीएनए स्ट्रक्चर आ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड रीनेचुरेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ double stranded DNA from the single stranded denatured DNA. Characteristics of renaturation. Renaturation depends on low temperature, that is occurs on cooling. When the temperature return to the lower means that when the at high temperature the denaturation occur when the high temperature is solution, when the solution is returned to lower temperature, so the denaturation occur. It also depends on the pH.
of the solution. Length and constituent of the DNA structure. It involves the formation of hydrogen bonds. As a result of renaturation, there is a decrease in absorbance occurs, while during the denaturation, the absorbance increase. And upon renaturation, there is increase in viscosity occurs. And the renaturation is directly proportional to the concentration of complementary sequences. यानी जितने complementary sequences की concentration ज़्यादा होगी उतनी ही renaturation ज़्यादा होगी.